आज हम लोग जा रहे हैं मैक्लॉयडगंज से धर्मशाला एक्सप्लोर करने एंड वी हैव आवर हिमालयन विद अस। We just fueled up and Dharamshala also has these convenient stores at the fuel stations like this one, in and out. And now we are trying to reach Dharamshala Stadium. We'll have to ask. भैया स्टेडियम के लिए कहाँ से जाना है? स्टेडियम नीचे भाई। I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. हेलो सर, धर्मशाला स्टेडियम के लिए कहाँ से जाना है? ये वाला रोड, ठीक है, थैंक यू। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. जस्ट म्यूज़ियम से थोड़ा सा नीचे ये हम लोग एक स्क्वायर पर पहुँचे हैं जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला चेलिया, और वी हैव टू फॉलो दिस पाथ। हम पहुँच चुके हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पर। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम अंदर घूमने के लिए टिकट चार्जेस लगते हैं 30 रुपीज़ ईच, तो 30 रुपये का आपको गेट से टिकट लेना पड़ेगा। एंड नाउ वी आर हेडिंग फॉरवर्ड। Dig any deeper now. I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम, जो कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है। सो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं दैट हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने ये रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स के लिए बनाया था, और यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल टीम जिसने मैच खेला था दैट वाज पाकिस्तानी टीम। वो भी एक ट्रायल मैच था विद इंडिया ए टीम। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल ओडीआई खेला गया था यहाँ पर, वो था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंग्लैंड ने इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया था। सो ये फैक्ट है। एंड पहला टेस्ट मैच वॉज प्लेड हियर बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि 2017 में हुआ था। तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुए हैं यहाँ पर सिंस इट इज़ बिटवीन माउंटेन्स एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में है, सो इट हैज़ ऑलवेज बीन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर पीपल। सो जो भी धर्मशाला मैक्लॉयडगंज घूमने आते हैं वो सब लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ नज़ारा देखते हैं। बहुत ही सुंदर स्टेडियम है, ऑल्दो है भी स्टेडियम काफ़ी छोटा, बट इट्स वर्थ द विज़िट। सो डू कम। एंड 30 रुपये का टिकट लगता है एक इंसान का अगर आपको अंदर आना है। और हम लोग अभी हैं विजिटर स्टैंड पे। आप सब जगह का एक्सेस नहीं ले सकते हो यहाँ पर, बट ये विजिटर स्टैंड है, आप यहाँ पर बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो बाकी सारे लोग कर रहे हैं।
सो वी आर नाउ लीविंग और अब हम जा रहे हैं फिर से धर्मशाला सिटी में कुछ और एक्सप्लोर करने. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now.